हेलो मेरे प्यारे जोश वाले बच्चों, एनएसईपी क्रैक करने वाले बच्चों, पूरा इरादा रखने वाले बच्चों। सो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स, हाउ मच इज योर डिटर्मिनेशन। पूरा जोश के साथ बता दो कितना डिटरमिन्ड हो, कमेंट बॉक्स में लिख दो, जिससे कि आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट। लेट मी नो हाउ डिटरमिन्ड यू आर। I reply to every comment, so you can write in the comment box. I reply within a few hours. So today we are going to talk about friction solutions in 5 steps. Friction सबको पता है, बचपन से देखते आए हैं, एक्सपीरियंस करते आए हैं। फ्रिक्शन क्वेश्चंस काफी आते हैं एग्जाम्स में, एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ वी कैन सॉल्व एनी फ्रिक्शन प्रॉब्लम इन 5 steps or less. So before that, I'm going to introduce myself. My name is Bhavdeep Sethi. You have taken so many sessions with me, so you know me. But let me repeat that. So I have done masters in technology from IIT Bombay with a big passion for teaching and a big passion for physics. I convert physics haters to physics lovers because I believe कि physics को रट्टा मारोगे तो physics बुरा मान जाएगी. Physics has to be understood from the things around you, from the day-to-day happenings around you, and once you start doing that, आप physics lover बन जाते हो. And I have given challenge to many students कि भाई 5 सेशन मेरे साथ ले लो, you will fall in love with physics, and I've done that many times. तो मेरी बात फिर कभी आज बात करते हैं हम why we should prepare for NSEP. सबसे पहले तो this is the first step towards your chance to represent Team India. अगर आप इसके सारे stages clear कर देते हो, और NSEP is the first stage, सारे stages clear कर देते हो, then you get a chance to represent Team India at the international level. Think about the pride that your family, your friends, your teacher, your relatives, your gully mohalla, your share, the entire India will be looking at you. So please remember the importance of this exam. You have a chance to represent Team India. अब अगर आप वो तो लास्ट स्टेज में होता है, बट अगर आप पहला स्टेज है जो एनएसईपी, उसको क्वालिफाई कर लेते हैं, एंड इफ यू आर इन फर्स्ट टॉप, है ना, टॉप 1% इन योर स्टेट, जहां भी आप रहते हैं उस स्टेट के टॉप 1% में आते हो, तो आपको एक मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है. यू कैन टेक दैट सर्टिफिकेट टू एनीवेयर, एनी इंटरव्यू, एंड इट कैरीज इट्स ओन वेट. और इन एडिशन भाई, जब आप इस एग्जाम की तैयारी करोगे तो आप एक कंसेप्चुअल स्टडी करोगे, आप मेमोराइज नहीं करोगे. एंड व्हेन यू डू दैट, द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू गेट इज गोइंग टू हेल्प यू इन जेई नीट या कोई भी एग्जाम, यार आपकी लाइफ में आपको हेल्प करने वाला है. तो मैं कहता हूँ हर स्टूडेंट को एनएससीपी की तैयारी करनी चाहिए. नाउ व्हेन वी आर ट्राइंग टू सॉल्व एनी क्वेश्चन फॉर एनएससीपी, जेई नीट या लाइफ की प्रॉब्लम्स, वी हैव टू ऑप्शंस टू डू दैट. या तो फिर हम इस तरह से करें या फिर इस तरह से करें. This is a straightforward method, and when you come across any question, let's say today we are talking about physics, you have an option to go straight. 4-5 स्टेप में कर सकते हो, या फिर आप बोलो नहीं मैं तो पूरा घुमा फिरा कर 25-30 स्टेप में करूंगा, जो ना मेरे को खुद समझ में आएगा बाद में, ना ही मैं किसी को अगर वो सोल्यूशन दूंगा तो उसको समझ में आएगा. सो यू हैव टू ऑप्शंस. आप किस रास्ते को चुनते हो आप देख लीजिए. मेरे ख्याल से तो ये रास्ता बेटर है. सो राइट इन द कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स, रास्ता नंबर 1 और 2, विच वन डू यू प्रेफर. मैं तो नंबर 2 प्रेफर करता हूं, और मैं आज आपको इसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा. सो पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दिस इज फ्रॉम जेई 2021 पेपर. Two blocks, mass of 0.5 kg and 4.55 kg are arranged on a horizontal frictionless table as shown in the figure. by figure को पेश किया जाए, ये रही figure. The coefficient of static friction between the two blocks is 3/7. कुछ अजीबो गरीब से नंबर दे दिए. Then the maximum horizontal force that can be applied on the larger block, ये 4.5 kg है, ये 0.5 kg है, so that the blocks move together is that dot 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 n. कितने न्यूटन्स, है ना. राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर. दीज आर न्यूमेरिक वैल्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इंटीजर वैल्यू वाले. एक जीएस 9.8, बट मैं तो बोलूंगा भाई 10 लेके आप करिए, क्योंकि आपको तो राउंड ऑफ ही करना है ना. तो द पॉइंट है कि ये तो फ्रिक्शनलेस टेबल है, फ्रिक्शनलेस है ये, इनके बीच में फ्रिक्शन है. तो सोचिए, अब इसको एक एक इससे समझते हैं. जैसे ये जो था मेरा मोटी बुक, दिस इज 4.5 kg, एंड लेट्स से दिस इज 0.5 kg. अब मैं मोटी बुक को पुल कर रहा हूं, तो भाई मोटी बुक क्यों चल रही है? दिस इज मूविंग बिकॉज आई एम अप्लाइंग ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन. Where there is a force, there is acceleration. So this started to move in this direction. But ये भाई साहब क्यों चल रहे हैं? See, the whole point is this needs some force.
तो who is providing the force? देखो मैं तो बुक को पकड़ा है ना, मैंने तो बॉक्स को पकड़ा ही नहीं है. So think about it, भाई ये बॉक्स क्यों चल रहा है? The reason for that is, let's say it were not moving, then this would happen ना, है ना, पैरों तले जमीन खिसक गई. चलिए anyways, humor for some time later, but so now अगर ये बॉक्स नहीं चलता तो this would be the situation. That means it would be sliding on this. Friction बोलता है भाई I will prevent any sliding between two surfaces in contact. So friction will say when the book was moving in this direction, it was like this box was moving in this direction relative to the book. So this box had a tendency to slide this way. Friction will say, I will try to stop you by providing a friction force in this direction. And this is exactly what is happening. So friction is moving this box. But how much is the limiting friction? That limits कितना acceleration मिलेगा. अगर मैं इसको बहुत तेजी से accelerate करूं इस book को, so there will be a scenario where this may not be able to come along with that, क्योंकि इस friction की एक limit है. जितना फ्रिक्शन इस सरफेस पे मिल सकता है इस बॉक्स को, वहां तक तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, उसके आगे नहीं एक्सेलरेशन होगा. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. ये जो बॉक्स है 0.5 kg का, दिस इज गेटिंग अ फ्रिक्शन फोर्स इन दिस डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज मूविंग. कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स? अगर ये 0.5 kg का है, तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, सो दिस इज 0.5 kg, तो इस पे 5 न्यूटन नीचे लग रहा था, राइट? 5 न्यूटन नीचे लग रहा है. 0.5 टाइम्स 10, मैं 9.8 की जगह 10 ले रहा हूं जान के, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर तक वैसे भी आपको राउंड ऑफ करना है, तो डजंट रियली मैटर. 5 न्यूटन नीचे, तो रिएक्शन फोर्स 5 न्यूटन. नाउ हाउ मच इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट कैन बी प्रोवाइडेड? Maximum friction is always the reaction force multiplied by the coefficient of friction. So the maximum friction that can be provided here is 5 times 3 by 7, which is 15 by 7 newtons. इससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग पाएगा. और ये फ्रिक्शन फोर्स कितना इसको एक्सेलरेशन दे सकता है, देख लेते हैं. सो फोर्स इज दिस मच इज द मैक्सिमम फोर्स. दिस फोर्स कितना एक्सेलरेशन देगा? टाइम्स 0.5 times acceleration. So this 0.5 comes down and this becomes 30 by 7. So acceleration maximum is equal to 30 by 7 meters per second square. So this is the maximum acceleration अगर इस बॉक्स को मिल सकता है फ्रिक्शन के कारण, उससे ज्यादा नहीं. तो अगर आप नीचे वाले बॉक्स को उससे ज्यादा से पुल करोगे, देन वो फास्टर निकल जाएगा और ये स्लिप हो जाएगा. वो कह रहे नहीं, ऐसा हम नहीं चाहते. तो ये फोर्स कितना होना चाहिए? अब अगेन वी हैव डन दिस स्ट्रेटेजी इन मेनी ऑफ द प्रीवियस क्लासेस. इसको एक ब्लैक बॉक्स जिसे कहते हैं, मैंने रेड बॉक्स कर दिया. तो अब आप सोचिए, दिस फोर्स इज प्रोवाइडिंग एक्सेलरेशन टू थिंग्स इनसाइड ऑफ दिस, एंड दोज थिंग्स इनसाइड ऑफ दिस शुड हैव ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ दिस. तो ये कितना फोर्स हो कि ये दोनों डब्बे इतना एक्सेलरेशन ले सके? 0.5 kg प्लस 4.5 kg, 5 kg है ये. तो कितना फोर्स होगा? फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. दिस इज गेटिंग मी हाउ मच? 150 by 7. And look at this. This is like 21 point something. And they're saying round off to the nearest integer. My answer would be 21 newtons. Now think about it. अगर आपने 9.8 लिया होता, तो 21 point something का जो अभी आ रहा है उससे थोड़ा कम आता. You would have to round down anyways. And that is why in these kind of questions you have to use the judgment कि भाई 9.8 बोला है, पर अगर मैं यहाँ 9.8 लिखूं, it would take me more time. So as I'm saying, friction solutions in 5 steps or less, you can count the number of steps over here. So this is how you solve any question in a similar manner. देखने में लगता है कि यार इसका free body, इसका free body. You don't have to. You just look at the big picture and say, अरे ये तो बहुत easy है. Otherwise you can do the same question. इसका free body बनाऊंगा, इसका free body बनाऊंगा, फिर उसका F equals ma लिखूंगा, इसका लिखूंगा, ये force, वो force. अरे नहीं यार, आपको simple करना है. Because you don't have to show the steps, you have to come up with the final answer. So let's proceed to the next question here.
which again we are going to solve in 5 steps or less. So before that, I'll talk about a little about inclined planes, क्योंकि अगला question involves inclined plane and many times students are confused mg cos theta mg sin theta क्या होता है. तो देखिए एक inclined plane है जिसमें एंगल ये वाला थीटा है. अब इस पे एक डब्बा रख दिया मैंने, है ना, डब्बा रख दिया. अब इंक्लाइन प्लेन था, डब्बा रख दिया. हाउ डज इट मैटर? ग्रेविटी बोलेगी मैं तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स पुल करूंगी mg से, एज्यूमिंग इसका मास mg है. Now, in the case of inclined plane, you have to remember one thing कि usually आप x axis, y axis ऐसे लेते हो ना, horizontal x, vertical y. In case of inclined plane, आप उसको shift कर दो पूरा. मतलब x axis को ऐसे shift कर दो so that it is parallel to the inclined plane and y axis is normal to the inclined plane. So what I mean here is I'll show you like this. So ये जो x axis थी वो ऐसे थी, उसको मैंने rotate किया है. Same goes with the y axis. They are still perpendicular to each other. But this is not vertical, this is not horizontal. X-axis is not horizontal, it is along the inclined plane. That will make your calculations easy. And vertical नहीं है ये, y-axis is normal to the plane. But gravity बोलेगी ठीक है यार, जो करना है करो, I will still apply the force downwards. That's okay. Then you can say, oh, मेरे को तो vectors आते हैं. So this mg can be broken as mg cos theta here, because think about it. This is theta, this is theta. है ना. इतना तो भाई आपको एनएसईपी स्टूडेंट्स हो, आपको पता ही है कि इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस इज आल्सो थीटा. सो दिस mg cos थीटा इधर लगेगा, mg sin थीटा इधर लगेगा. सो mg को मैंने ब्रेक कर दिया so that the calculations are easy. Now this mg cos theta, think about it again कि भाई inclined plane मजबूत है, ये बॉक्स गड्ढा करके अंदर नहीं जा रहा या ऊपर भी नहीं जा रहा. So this mg cos theta is balanced by a force in this direction, that is the normal reaction force, which is mg cos theta. So normal to the plane तो सब balance out हो गया, but this mg sin theta is unbalanced and this is why the thing will slide down. We are assuming a smooth surface right now. तो अगर ये smooth surface है तो mg sin theta से ये नीचे आएगा. अब और सोचे आगे कि हो सकता है फ्रिक्शन हो. फ्रिक्शन होगा तो जब ये नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर होगा. कितना होगा? अरे maximum is always mu times the reaction force. So the maximum friction in this direction will be mu multiplied by m cos theta. लिख दिया, mg cos theta लिखना है. And again this is where I tell many students many times, लाइफ लेसन है भाई, गलतियां करोगे उनसे सीख लो. मैंने गलती करी अभी, दैट्स ओके, मैंने कर दी, गलती कर दी, लेकिन मैंने सुधार लिया उसको. डोंट स्ट्रेस. एग्जाम में आप गलतियां करोगे लेकिन आप उनको सुधारोगे. स्ट्रेस लेकर वहां पर आप सोचो भाई टाइम वेस्ट हो गया, नहीं नहीं नहीं, लुक है ना फॉरवर्ड. मैं इस पे भी सेशंस लूंगा, लेता रहता हूँ इन तरह की चीजों का, बट फॉर नाउ, फॉर सम अदर डे देखेंगे. तो ये बैलेंस आउट हो गया. अब ये नीचे ला रहा है, लेकिन अगर फ्रिक्शन होता, फ्रिक्शन वुड बी इन दिस डायरेक्शन. हाउ मच वुड दैट मैक्सिमम बी? म्यू टाइम्स दिस रिएक्शन फोर्स, नॉट म्यू mg cos theta. With this understanding, let's do a question on friction here. Let's see. So the question is, an inclined plane is bent in such a way that the vertical cross section is given by y equals x square by 4. ये तो कुछ पैराबोला की याद दिला रहा है मुझे, where y is in vertical and x is in the horizontal direction. If the upper surface of this curved surface is rough with a coefficient of friction 0.5, the maximum height in centimeters in which a stationary block will not slip downwards is. ऐसे क्वेश्चंस ना यूजुअली मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ and I'll let you think about it for maybe 20 seconds. Take your time. Perfect. 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 Okay. So now what they're talking about, वो बोल रहे हैं कुछ inclined plane ऐसा है कि भाई अभी तक जो हमने inclined plane देखा था उसकी जगह inclined plane कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है ना. ये कुछ ऐसा inclined plane है कि ये सरफेस है ना, एक पैराबोलिक सरफेस है. तो मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली आई वेंट टू डेस्मोस and I try to copy this because this is going to be easy. If you don't know what is Desmos, let me show you first. So if you go to Desmos, this is the Desmos. यहाँ पर आप ऐसे मैं करके दिखा देता हूँ ना इसको. So basically, if you go back and say, okay, this is my graphing calculator, you go to desmos.com
स्लैश कैलकुलेटर, है ना, यू राइट y इज इक्वल टू x, अरे स्ट्रेट लाइन बन गया, टू द पावर 2, अरे पैराबोला बन गया, क्या बात है ना, बट देन आई डोंट नीड दैट, आई नीड बाय 4, सो बाय 4, ओके पैराबोला ऐसे था, अभी ओपन हो गया, एंड प्ले अराउंड विद दिस, दीज आर द टूल्स दैट मेक यू लर्न. So what I did is I just copied this into this. That's all I have done. Uh, so let's start the slideshow here and let's see how we can solve this awesome question. तो बोला क्या है कि ये जो surface है, this is, है ना, तो अगर आप सोचो इसमें, अगर मैं यहाँ पर कोई बक्सा रख दूं, सपोज यहाँ पे मैंने कोई बक्सा रख दिया, तो mg तो बोलेगी नीचे है, एक नॉर्मल लगेगा, एक इधर आगे स्लाइड डाउन होगा, लेकिन स्लाइड डाउन होगा तो फ्रिक्शन ऊपर रोक रहा होगा, तो कह रहे भाई कितना ऊपर तक रख दूं कि स्लाइड डाउन ना हो. You have to understand one thing, that this is not a plane surface. So what that means is कि आपका जो थीटा है, थीटा keeps changing. You have to understand, इसका स्लोप यहाँ पर कुछ था, स्लोप बढ़ता जा रहा है. You have to use the concept of slope here. So theta is increasing. Theta is increasing. Now you know, as theta increases, sin theta increases. है ना, ये बात आपको पता है obviously. And as theta increases, the cos theta decreases. है ना, सो जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं, थिंक अबाउट इट, mg नीचे था, mg cos थीटा इधर था, mg sin थीटा इधर था, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो तो mg cos थीटा कम होता जा रहा है और mg sin थीटा बढ़ता जा रहा है ना. So this is what the question is talking about. So let's go to the next slide where I have more room to work on this, and I'll show you in a systematic way how to solve this question. It's a very easy question. I'm going to make it very simple for you. तो सपोज यहां पर किसी पोजीशन पर रखा है मैंने इसको, है ना, अब ग्रेविटी बोलेगे भाई आप जो मर्जी करो, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, mg नीचे लगाओगे, तो आप बोलोगे ठीक है उसको ब्रेक कर देते हैं, mg cos थीटा इधर लगेगा, mg cos थीटा इधर लग गया, and then you say okay there is mg sin theta on this side, so this is mg sin theta, है ना. What I have done is I've broken mg into mg cos theta and mg sin theta. अब जैसे पहले हमने देखा इस डायरेक्शन में तो कुछ नहीं हो रहा, तो बेसिकली देयर इज अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स व्हिच इज mg cos theta. दिस इज द रिएक्शन फोर्स, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. But then we know, as it is trying to slide down, there's a friction force going up, which will say, okay, mg sin theta तो इसको नीचे लेके जा रहा है, मैं रोकूंगा, है ना. Now think about it, as you go ऊपर, mg sin theta की वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्योंकि थीटा इंक्रीज हो रहा है, देखिए थीटा इंक्रीज हो रहा है ना, उसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है, और इसकी कम होती जा रही है. तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू mg cos थीटा. तो जैसे से ऊपर जा रहे हैं, म्यू mg cos थीटा कम होता जा रहा है, mg sin थीटा बढ़ता जा रहा है. तो देयर विल बी ए पॉइंट वेयर दे विल बी इक्वल, और उसके थोड़ा सा भी ऊपर जाओगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, एंड दैट इज वेयर इट विल स्टार्ट गोइंग डाउन. तो व्हाट वी आर सेइंग इज, कहां तक लेके जा सकते हो, जहां तक mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा. तो लिख लेते हैं. तो हम कह रहे हैं कहां तक ऊपर लेके जा सकते हो, जहां तक mg sin थीटा is equal to the limiting friction which is mu mg cos theta. Perfect. So now you can see mg and mg cross out, sin theta by cos theta is tan theta. So we are saying कहां तक ऊपर लेके जा सकते हो, जहां तक tan theta is mu. Tan theta is mu. But what is tan theta? Tan theta is the slope. Slope कैसे आएगा? dy by dx. Remember? So here the y is given as x square by 4. So what is tan theta? Tan theta is dy by dx. So d by dx इसका करेंगे. That means d by dx इसका करेंगे. So 4 is a constant. पहले बाहर आ जाएगा. d by dx of x square is 2x. 2x. So 2x divided by 4, that is x by 2. That is x by 2. That is x by 2. So what we are saying is, जो इसका tan theta है, which is x by 2, that is equal to mu, है ना, वहां तक हम लेके जा सकते हैं ना. tan theta तो कितना आया, tan theta this is the slope, tan theta means slope आया x by 2. So we are saying slope is equal to mu is 0.5. remember mu is 0.5, so that is 1 by 2. so 2 से 2 कटा,
तो maximum value of x will be 1. Maximum value of x will be 1. But let's go back and see what they're asking. भाई पूछते क्या हो आप? वो पूछ रहे हैं द मैक्सिमम हाइट इन सेंटीमीटर्स, मतलब वो हाइट पूछ रहे हैं भाई, हाइट पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, हाइट पूछ रहे हो तो हाइट मतलब y, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 विच इज 1 का स्क्वायर बाय 4 है ना, विच इज इक्वल टू 1 बाय 4. Now 1 by 4 is in meters. So that is equal to 25 centimeters. क्योंकि these questions are numeric value questions. आपको 25 चूज करना है एग्जाम है ना. अगर 25.3 आता है तो आप 25 चूज करते हैं. Okay, let's proceed here and continue with our awesome journey here. A force of 100 newtons is needed. A force is needed है ना, is needed टाइप करना था, कोई नहीं. To be applied parallel to a smooth inclined plane. Smooth मतलब कोई friction ही नहीं, just to hold a body on it. The angle of inclination of the inclined plane is 30 degrees. How much horizontal force is needed to be applied to do the same? JEE का क्वेश्चन है, ईयर मेरे को पता नहीं है. I can figure out and write in the description later, but this was in one of the JEE mains का exam. Advanced का नहीं है, this is mains exam. So 50, 87, 100 or 150. Now this question can be done in a chutki like this in 1 or 2 steps, but there is a way you can complicate it and make a khichdi out of it, and I'll show you both, you know, so that you can compare and see what mistakes you should not do. So anyways, try to solve this. A force of 100 newtons is needed to apply parallel to a smooth inclined plane. तो चलिए बनाते हैं फिर, ना बनाते हैं इसको. तो एक inclined plane बना देता हूँ. बना दिया भाई inclined plane. अब इसमें कहते हैं भाई कोई डब्बा रखा है, रख दिया डब्बा. अब वो देखो डब्बा रखा है, कोई थीटा यहाँ पर थीटा दिया 30 डिग्री दिया है. अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर दैट. सो दिस इज 30 डिग्रीज. नाउ दे आर सेइंग ओके, इसको नीचे तो ले आओ भाई. हाँ, है ना. तो नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज 100 न्यूटन चाहिए इसको रोकने के लिए. तो आप देखो यहाँ पर m इसका मास है, तो mg cos थीटा, mg sin थीटा. सो बेसिकली दे आर सेइंग mg sin थीटा लग रहा था, आपने 100 ऊपर दे दिया. Now if you want to complicate, you can say I'll calculate the value of mg, क्योंकि mg sin 30 is equal to, you know, that force and all that, and I'll show you in the next slide how you can do that way. But for me it is as simple as saying कि भाई यहाँ पर कुछ लग रहा था which was mg sin theta sin 30, और थीटा है ना चाहिए पड़ेगा आगे, इसलिए एक काम करते हैं, पहले इसको प्रॉपरली मैं लिख देता हूँ एक पतले पेन से. भाई इसका पेन नहीं इतना मोटा, ठीक है चलिए. सो दिस इज एम जी साइन 30 है ना, ये तो हमको पता है साइन 30. सो वी नो दैट दिस इज साइन 30. नाउ दे आर सेइंग अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन्स इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन टू होल्ड इट. कोई 100 न्यूटन से पुल कर रहा है. तो एक चीज तो क्लियर है कि mg sin थीटा इज 100, ये मेरे को पता चल गया. मतलब ये mg की मेरे को जरूरत ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ ये पूरा जो है 100 है, क्योंकि तभी तो इक्विलिब्रियम पे है ना. अब वो बोल रहे फोर्स ऐसे की जगह ऐसे हॉरिजॉन्टल लगाना है. थिंक अबाउट दिस, फोर्स ऐसे की जगह ऐसे लगाना चाहता हूँ, क्यों? अरे उनकी मर्जी है यार. तो फोर्स ऐसे की जगह ऐसे लगाऊं तो कितना लगेगा? तो चलिए बना लेते हैं एक और डायग्राम इधर. एंड अगेन बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, दिस माइट टेक अ लिटिल लॉन्गर, बट अगर आप करोगे तो करने में तो बहुत कम टाइम लगना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया ऑलरेडी. सो अब वो कह रहे हैं कि भाई मेरे को पता चल गया कि एम जी साइन थीटा 100 था, तो 100 ही लिख देता हूँ यहाँ पे, एंड दिस वाज 30 डिग्रीज. ये भी एक नोन नंबर है और उसके बिना क्वेश्चन हो भी नहीं सकता. तो बोल रहे अब अगर मैं ऐसे फोर्स लगाना चाहूँ दिस एफ, हाउ मच इज दिस एफ दैट इज नीडेड? दिस इज द क्वेश्चन. नो एज आई सेड अर्लियर, इंक्लाइन प्लेन के केस में ये हॉरिजॉन्टल जम नहीं रहा. या तो फोर्स को अलोंग करो या परपेंडिकुलर करो. ठीक है, तो हम कर लेते हैं. तो हम क्या करेंगे, इफ दिस इज एफ, आई एम ट्राइंग टू ब्रेक इट इनटू दिस ब्लैक फोर्स, एंड व्हाट कलर शुड आई चूज फॉर द अदर वन? हो गया ग्रीन, हो गया ये ले लेता है येलोइश, है ना, एंड परपेंडिकुलर. Now if this is 30, this is also 30. Come on, this is too easy for students like you. And if this angle is 30, this is also 30. So f green वाला इधर है, तो this will be f cos 30 and this will be f sin 30. So this is f sin 30, but f sin 30 से भी आपको कोई मतलब होना नहीं चाहिए.
because all this is balancing out with mg cos theta reaction force. I'm not interested. What I'm interested in is ये black कितना होना चाहिए. तो black तो है f sin 30 है ना. f sin, oh, f cos 30, sorry, f cos 30. So this is f cos 30. f sin 30 यहाँ लग गया, f cos 30. So if this is f cos 30, that should be equal to 100. तभी तो इक्विलिब्रियम पे होगा. वो बोले फोर्स ऐसे लगा रहा हूं लेकिन इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तो हम कह रहे हैं इसको ऐसे ब्रेक करो, ऐसे करो, ये तो आपस में सब कैंसिल हो जाएंगे. अब ये ब्लैक फोर्स इज f cos 30. So f cos 30 मतलब f cos 30 is root 3 by 2. f cos 30 should be equal to this blue force 100. And you take that there. So this implies f is equal to 200 by root 3. Now, if you use your judgment, you don't really have to do any calculations. Come on here. And this is 200 divided by root 3. If this number was 200 divided by 2, you would get 100. Now, this is 1.732, which is less than 200, with less than 2. So this number, the whole of it is a little greater than 100. And the only option given here is this. If the options were 115, 116, 117 and so on, then you would apply some calculations. इधर यार 200 by 200 होता है, तो 200 by something lesser than 2 is a little more than 100. That's all. And now I will show you, if you were to do this question in a difficult manner, like many teachers tell you to do and many students do, कि भाई इतना simple तरीके की जगह. See, in this simplified method, I didn't care about what is mg. All I care about is ये जो force लग रहा है, ये component 100 है, that's all. But if you were to do in a different method, you would do so many steps. What you will now do is, first you will say, okay, mg sin theta is equal to 100, so mg into sin theta की value 1 by 2 रखी, तो mg 200 आ गया. Then you plug those values here. You say so many, है ना? So you don't have to do all that. You just do the questions in 5 easy steps. Any question. ना अब बात आती है कि भाई ठीक है, इतना कुछ सीख लिया, तो क्या एनएसईपी मेरे से हो पाएगा? एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट हो पाएगा, आई ऑलवेज शो द पिक्चर ऑफ ध्रुव हु गॉट गोल्ड मेडल फॉर अस एंड आदित्य नवनीश हु गॉट सिल्वर मेडल फॉर अस. सो ध्रुव गॉट ए गोल्ड इन फिजिक्स ओलंपियाड इन 2023. इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है यहाँ पर, इंटरनेशनल. आवर स्टार स्टूडेंट ध्रुव. और इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है, अदिति नवनीश, दे हैव गॉट द सिल्वर मेडल इन केमिस्ट्री ओलंपियाड. और पुराने अगर ओलंपियाड दिखाऊंगा तो बहुत सारे हैं. दिस इज ओनली फॉर 2023. इवन इन 2023 वी गॉट सो मेनी अचीवमेंट्स. लेट्स कीप इट क्विक एंड शॉर्ट. तो कहां से शुरू करें भाई? आपको सक्सेस इक्वेशन से शुरू करना है. जो भी आपकी जर्नी है, यू हैव टू फाइंड द राइट गुरु. एक अच्छा गुरु आपको अच्छी गाइडेंस देगा, ठीक गाइडेंस देगा. देन यू हैव टू हैव योर ओन डिटर्मिनेशन एंड योर ओन हार्ड वर्क. गुरु का हार्ड वर्क नहीं काम करेगा, आपका हार्ड वर्क. तो जब अच्छा गुरु मिल गया, आपकी हार्ड वर्क और कमिटमेंट हो गई, तो सक्सेस की गारंटी है. बट प्रॉब्लम आती है शुरू कहां से करें भाई, गुरु कहां से ढूंढे? सो आई हैव बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. I have taken so many students who have done so good, and I'm proud of them. Sometimes they say, "Sir, we are proud of you. Thank you to for being our teacher." I say, "No, I am proud of you because you worked hard." So I have a lot of experience, and I have started this NSEP course. It's divided into 5 modules, 2 months each. I'll show you the modules also. These are the minimum classes that we have: Thursday, Friday, 6:50 is 7:30. But in addition, we keep arranging for extra classes. ये तो minimum 2 बार हफ्ते में मिलना है. But as and when required, like this week I had 3 classes. Earlier I had more than 3 also. Assignment is given every time, है ना? All every day on Telegram channel, not channel, group में जहां आप भी participate कर सकते हो. आप पूछोगे डाउट, हमेशा always available. डाउट क्लियरिंग always available. मैं डाउट क्लियर करूंगा, बच्चे आपकी करेंगे आपस में, टेस्ट होंगे. अब when I'm saying doubts, this is where, है ना, just a sample here कि भाई स्टूडेंट्स आर आस्किंग डाउट्स एंड मेनी टाइम्स आपस में डाउट क्लियर कर देते हैं. तो जिसकी डाउट है ठीक है, उसका तो डाउट क्लियर हुआ, जिसने क्लियर किया उसकी भी डाउट, है ना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई. जब आप किसी का डाउट क्लियर करते हो तो आपको और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं ना. सो इट इज अ विन विन सिचुएशन. और जब तक मैं आता हूँ क्लास के बाद कि मैं देखूं किसकी डाउट है, आधे से ज्यादा सॉल्व हो गई होती है. एंड द रेस्ट ऑफ इट आई टेक केयर ऑफ. एंड इवन द वंस दैट आर सॉल्व्ड बाय स्टूडेंट्स, आई रिव्यू देम कि भाई कोई गलती तो नहीं हो गई. छोटे शॉर्ट वर्ड्स में बोलूं तो दिस इज अ कम्युनिटी, लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स ओवर हियर, है ना. आपको एक 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 ग्रुप मिलेगा जिनके साथ आप साथ में बढ़ोगे, एक हेल्दी कंपटीशन के साथ. तो दिस इज हाउ द क्लासेस हैपन.
यहाँ चैट में आपस में डिस्कशन होता है, भाई इसका क्या आंसर, उसका क्या आंसर, एंड देन देर आर क्विज क्वेश्चंस जहाँ ऑप्शंस होते हैं, देन टाइमर होता है, और जब अच्छा रिजल्ट जैसे ये आएगा, लीडर बोर्ड बनेगा, किसने कैसे परफॉर्म किया, हर क्वेश्चन में बनेगा, क्लास के एंड में भी बनेगा, और ये सारा डेटा कलेक्ट होकर आपकी रिपोर्ट कार्ड भी बनेगी। और जब अच्छा रिजल्ट आता है, जैसे एक क्वेश्चन दिया था उसका 90.48% स्टूडेंट्स गेव द राइट आंसर, वी सेलिब्रेट, बिकॉज स्टडीज हैव टू बी एंजॉय, बोरिंग नहीं करना पढ़ाई को यार। तो हाउ डू यू ज्वाइन दिस कोर्स, बेसिकली दिस आर द मॉड्यूल्स, और जो अभी स्टार्ट हो गया दैट्स ओके, ये मॉड्यूल की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ऑल द क्लासेस आर रिकॉर्डेड, तो आप जो मर्जी मॉड्यूल ज्वाइन करो, डजेंट मैटर, आपको पुराने मॉड्यूल्स का भी दे देंगे, फ्री दे देंगे, and then if required we can have extra classes also, so I recommend you buy the entire thing. And how do you buy that? So first of all, how's the जोश, फोड़ना है, ठीक है। तो कैसे ज्वाइन करना, आप जाओगे वेदांतु.com कोर्सेज ओलंपियाड में, काम करता हूँ नहीं दिखा देता हूँ, ये वेदांतु.com कहाँ है भाई, भाई इसको डिस्कार्ड किया, इधर आ गए, तो वेदांतु.com पे लॉग इन नहीं किया हुआ मैंने, कोर्सेज में गया, कोर्सेज में आप देखो यहाँ पर ओलंपियाड लिखा हुआ है, ओलंपियाड में गया, फिर यहाँ पर लास्ट में ये खुल जाएगा, तो मैथ मास्टरी कोर्स, लॉट ऑफ ऑसम कोर्सेज है, वेदांतु ओलंपियाड स्कूल इज ऑसम। तो यहाँ पर आपको दिखा है एनएसईपी 2024 रिकॉर्डेड, दिस यू कैन बाय, इट्स अ लिटिल चीपर, बट यहाँ डाउट क्लियरिंग, लाइव क्लासेस वो सब नहीं मिलेगा, बट दिस इज ऑसम कोर्स इफ यू वांट। बट जिसकी मैं बात कर रहा था, जो स्क्रीनशॉट दिखाए थे, वो ये था एनएसईपी मॉड्यूल 1 मैकेनिक्स पार्ट 1, ऐसे मैकेनिक्स पार्ट 2, थर्मोडायनेमिक्स, सारा कुछ आएगा अभी यहाँ पे। So you can click on this and you can purchase. So this is how you purchase it. And I'm going to also put it in the, है ना, in the direct link in the description box, so you can directly click. So courses for Olympiad for NSEP Module 1 Mechanics 1. So again, I'll see you very soon, students. But before I end the session, I always say, believe in yourself. आपका जो भी सपना है, आप अपने आप से रोज सुबह उठते हो तो बोलो, मैं ये करके दिखाऊंगा, ये मैं करके दिखाऊंगी, मैं करूंगी, करूंगा। अपने आप पर विश्वास करो, कोई भी सपना छोटा लगेगा, आराम से अचीव होने वाला है आपका एनी ड्रीम। सो आई विल सी यू सून बच्चों, जोश वाले बच्चों, कीप अप द हाई जोश, बाय बाय।